Hello dear students, you all are welcome again. This is Harvinder Singh from Mahatma Gandhi Government School, Seva. So as you can see on the board, today I am here with the subject English of class 7, chapter 3, Gopal and The Hilsa. Actually, in this chapter, we read a story through a comic book. First, you need to know what is comic book. Comic book means a book which contains stories mainly told through pictures. So this story, as we can see here, there are so many pictures, and this story is also expressed through pictures. This story has been told to us through pictures. So what is the story? Actually, in this story, the main character is Gopal. As I have told you earlier that I will discuss the summary in both languages, Hindi and English. So first we are going to discuss it in English. So here we see that in a region, in a particular region, in a special season, there is the season of Hilsa. Everyone is busy in catching Hilsa. So the market is full with Hilsa fish. Fishmongers are selling Hilsa fish there, and everyone is just talking about the Hilsa fish. Everywhere. It is the story of an ancient time. So there in that region there was a kingdom. So in the whole kingdom, everyone is just talking about Hilsa fish. What is the cost of Hilsa fish? Have you bought some Hilsa fish? Have you? And ladies, gents, children, all are busy just discussing Hilsa fish. So in the court of the king, there was only just this discussion is going on about Hilsa fish. Courtiers are also busy in discussing Hilsa fish. So the king is just fed up of all this, and he just gets angry and he scolds all the courtiers. What are you talking about? You all are just busy in talking Hilsa fish. I am fed up with it. Stop it. But after that he feels guilty, and he apologizes for that. There in the court of the king, there was a very brilliant person named Gopal, one of his courtiers. So the king tells all the courtiers, king says that it's my fault that I have scolded you, but it is the season of Hilsa fish, and everywhere just only one discussion is going on, and that is about the Hilsa fish. So here also, and even our intelligent person Gopal can't stop it for 5 minutes. But Gopal just at the time says that king, I could stop it. It means he accepted the challenge. Then the king says, if you could stop the whole discussion about Hilsa fish, then accept one challenge from me, that go to the market, buy a Hilsa fish and come with it to the palace without being
without being focused, without being noticed, without any discussion about Hilsa Fest. Go to the market and it will be the condition that you have to come to the palace without being noticed the Hilsa Fest. He accepted the challenge and to complete the challenge, the king also says that when you come to the palace from the market, there should not be spoken a word about Hilsa Fest. So, he prepares to go to the market, and his wife says, "What are you doing?" He just says that I am going to the market to buy Hilsa Fest. But actually, when he dresses up to go to the market, he dresses up in a ridiculous way. He has half shaven his face for that. With half shave, he go to market. Altogether, he also smear ash on his face. He put ash on the face and he wears rags. His wife again says, "Where are you going in this way? In those disgraceful rags? What are you up to?" He again says that I am going to the market as I have told you, woman, I am out to buy a whose Hilsa Fest. When he purchases Hilsa Fest, all the persons are just wonder that what type of person is he? What type of gesture, what type of get-up he has? What type of clothes? They all says that he is looking ridiculous. He is not looking like a normal person. He may be mad. So he just keeps the Hilsa Fest in his hand. But nobody is noticing Hilsa Fest. Everybody is just talking about his look, talking about his activities. He comes to the court, but the courtiers stop him to enter the palace. He starts singing aloud that I want to meet the king. The courtier says that this man is very crazy. He is not looking like a normal being. He may be mad, but he says, I want to see the king, let me in the palace, please. The king, sitting in the palace, hears all this and asks his courtier to let the man come in the palace. Gopal enters the palace.
comes in the court. There are so many courtiers in the king's also. The king says, "Who are you?" The king is also unable to identify Gopal, but the courtier says that he looks like Gopal. So the king also says, "What type of dress you have worn? And what type of person are you looking like? What is this Gopal?" Nobody notices the big hilsa fish in his hand. Everybody is just noticing the get-up of Gopal. Everybody is just noticing his rags, his disgraceful look. Then Gopal says that, "My lord, you are forgetting something." King says, "What?" Then Gopal says that, "Yesterday you gave me a challenge that buy a hilsa fish from the market and come to the palace without being noticed or without saying a word by anyone about this hilsa fish. And I have accepted the challenge and I have done it. Nobody have noticed, nobody have discussed the hilsa fish, nobody have said a word about hilsa fish yet." So this is the whole story. The king congratulates him for accepting the challenge and completing it. So अब हिंदी में मैं आपको बता दूं कि ये कहानी है। गोपाल इसमें मेन कैरेक्टर है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक कॉमिक बुक की स्टोरी है। कॉमिक स्टोरी होती है जिसमें पिक्चर्स के माध्यम से पूरी स्टोरी बोली जाती है। तो इसमें हम देख सकते हैं बहुत सारी पिक्चर्स हैं जिनसे पूरी स्टोरी इस कहानी में बोली गई है। तो इस कहानी में दिखाया गया है कि एक क्षेत्र विशेष है जहाँ पर पुराने समय में कोई राज्य है और वहाँ चारों तरफ सीजन चल रहा है हिल्सा फिश का। हिल्सा एक मच्छी है तो उसका सीजन है। सब लोग चाहे वो औरतें हों, पुरुष हों, बच्चे हों, बूढ़े जवान सभी हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे हैं। घरों में भी वही बातें, तो वही सारी बातें राजा के कोर्ट में दरबार में भी होती हैं। तो राजा ये सुन सुन के बोर हो गया, वो तंग आ जाता है। वो अपने कोर्टियर्स पे, दरबारियों पे झुंझलाता है, डांटता है उनको, लेकिन उसके बाद फिर माफी भी मांगता है। लेकिन वो समझता है कि भाई सीजन चल रहा है हिल्सा फिश का, इसलिए सब लोग हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे कोर्टियर्स में सबसे विद्वान जो है वो गोपाल है, वो भी उनको बात करने से नहीं रोक सका हिल्सा फिश के बारे में। लेकिन गोपाल बोलता है कि महाराज मैं तो रोक सकता था और मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो राजा बोलता चल ठीक है, ऐसी बात है तो एक चैलेंज है तेरे लिए कि कल तू मार्केट से एक हिल्सा फिश खरीद और महल तक आ, और महल में आने तक एक भी शब्द हिल्सा फिश के बारे में कोई भी एक शब्द ना बोल पाए, ऐसा तुझे करना है। अगर इसमें सफल होता है तो चैलेंज को स्वीकार कर। गोपाल बोलता है ठीक है मैं चैलेंज स्वीकार करता हूँ। गोपाल दूसरे दिन अपना ड्रेस ऐसा बनाता है, आदि सेव करता है और कपड़े पहनता है फटे टूटे से, और राख जो है वो अपने चेहरे पे लपेटता है और उस तरीके से वो बाजार जाता है हिल्सा फिश खरीदता है। अब वहां पे जब वो इस तरीके से जाता है तो कोई भी हिल्सा फिश को देखता नहीं है, ना उस पर ध्यान देता है, ना उसके बारे में एक शब्द बोलता है। सभी लोग गोपाल के बारे में ही चर्चा करते हैं, ये कैसा लग रहा है, कोई पागल व्यक्ति है क्या है, इसकी ड्रेस देखो कैसी है, चेहरा कैसे बनाया हुआ है। तो उसके हाथ में जो हिल्सा फिश है उस पर कोई गौर नहीं करता। सब लोग गोपाल के हुलिया के विषय में ही बात कर रहे हैं और वो इसी तरीके से दरबार महल के गेट पर आता है, वहां तक भी किसी ने एक शब्द नहीं कहा, सब उसी को देख रहे हैं।
दरबारी उसे घुसने से रोकते हैं, लेकिन वो जोर जोर से गीत गाता है कि मुझे राजा से मिलने दो। राजा अंदर बैठा सुनता है, वो बोलता है उसको अंदर आने दो, कौन है। तो गोपाल जब अंदर जाता है तो राजा भी उसको पहचान नहीं पाता है, और उसके हाथ में जो हिंसा है अभी भी उस पर किसी ने गौर नहीं किया। फिर कोर्टियर बोलते हैं ये तो शायद गोपाल है। तो राजा बोलता है गोपाल ये क्या हुलिया है, ये क्या कर रखा है। तब गोपाल बोलता है राजा आप कुछ भूल रहे हैं महाराज। बोले क्या। कि उसने कहा कि ये भूल रहे हैं कि कल आपने एक चैलेंज मुझे दिया था कि हिंसा किसको लेके आओ, बिना उसके बारे में एक शब्द भी चर्चा हुई उसको यहाँ महल में लाओ, और यहाँ तक एक भी शब्द उस हिंसा किसके बारे में कोई नहीं बोले तो तुम वो चैलेंज जीत जाओगे। तो राजा को याद आता है, राजा बोलता है बिल्कुल तुमने चैलेंज स्वीकार किया और चैलेंज को पूरा किया। और राजा फिर उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बधाई देते हैं। ये आपकी स्टोरी है। सो चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइजेस दिए हैं क्वेश्चन आंसर्स है, तो उन क्वेश्चंस आंसर्स को अपनी नोटबुक में करें। जैसा मैंने पहले भी बहुत बार बोला, चैप्टर में सारा आपको पढ़ा चुका हूँ, ये अपनी नोटबुक में करें। और दिया गया होमवर्क जो हम यहाँ स्कूल से आपको दे रहे हैं उस होमवर्क को नोट करें, उस होमवर्क को शीट पर करके स्कूल में जमा कराएं। थैंक्स।